Hi guys, finally the CMAT results are out. So this year's scores is not a good way to see the numbers because of all the wrong questions. Because the wrong question, they have given extra marks to everyone. That's why you're looking at scores being extra. So 355 marks पे topper 99.99 percentile, which is obviously skewed. जिसका मतलब कि रॉन्ग मार्क्स को सबको मार्क्स मिला. तो डोंट लुक एट स्कोर, लुक एट द परसेंटाइल. सो जो आपका NTA करके दिया है, दैट्स अ परसेंटाइल विच इज वी आर गोइंग टू यूज टू मेक दिस कट ऑफ विच आई मेड द चार्ट हियर. सो स्टार्टिंग द 60 परसेंटाइल. सो 60% के नीचे जिसका स्कोर है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू रादर लुक एट अदर एग्जाम्स और apply for these college because they give a call to everyone, but 60% is a good number to convert, a good percent to convert for the GDPI. So Doon Business School, Kirloskar, NDIM Delhi, SDM IMD, BK MK MP Birla and IIRM. These are the colleges which will get a 60 percentile. Now I was reading the comment in my earlier video, people saying कि अरे ये सब private colleges हैं, ये आप कैसे recommend कर सकते हो. तो भाई स्कोर पे यही मिलेगा, तो स्कोर भी देख अपना, जिस स्कोर पे यही मिलने वाला है. तो दिस इज द कट ऑफ्स एज पर द कॉलेजेस विच आर देयर. दिस इज अनबायस्ड. आई लुक एट द वेरियस वेबसाइट एज वेल टू चेक द कट ऑफ्स. सो ये द कट ऑफ्स, वो ज्वाइन करना नहीं करना वो आपका डिसीजन है. मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आगे ज्वाइन करना ऑब्वियसली यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू शुड टॉक टू द पेरेंट्स, यू शुड टॉक टू द कॉलेजेस टू चेक वेदर द कॉलेज इज द राइट fit for you or not. ठीक है, 60 percentile. Now 70 percentile with a lot of decent colleges, where the decent colleges start. MET, IES Chetna in Mumbai, Oriental Business School, ITM Kharghar, iFeel, Christ College, BIMTech, XIME and BITS Ranchi. These are colleges you can get at 70 percentile. ठीक है, again I don't want to look at score because 70 percentile 200 पार पे ही आपको 70 पर मिल रहा है. तो look at the scores, it doesn't make a difference. Anyway, in the description box I given the link for last 3 years का cutoffs scores, so you can see the difference between the last year का cutoff. So 2017, 18, 19 3 साल का cutoff के पास है, वो एक बार आप देख सकते हो. तो 70 percentile पे these are the college you can apply for. Now you have to go to the website of each of these colleges in that zone आपकी range में जो है. तो 60 to 70 वाला you can get this thing, 65, 68, 70. 70 to 80 वालों का this is a range you can get a call from them. 80 percentile पे where more better college starts. So Valinkar, Mumbai, SIS, Dalmia, IMT Nagpur, NIBM, Pune, Alliance Business School, Bangalore, and NIA, National Insurance Academy. These are the colleges you can get at 80 plus. तो आपका 80 के ऊपर स्कोर है, you can apply for these colleges. And trust me, all of them are decent college. By decent college मतलब average salary around 6 to 7 lakhs. ठीक है. So now there comes the main problem कि 6 to 7 lakh is around 50,000 per month, which is not a bad salary. But तुम्हारा दोस्त अगर 12 कमा रहा होगा या 20 कमा रहा होगा, फिर जलना मत कि अरे यार मेरा तो वो तो 20 कमा रहा है. So in short, don't compromise. If you can hold on for one more year, if you can try for other exams, for example for the master based student and even for the OMS as well, CET act as a very good backup plan. CET have no negative marking, CET have no GK, and CET have very less quantity of maths. And because of these reasons, CET become a very good exam to take. And I can bet on that for most of you, your CET scores will be better than your CMAT scores. So CET percentile is going to be better than CMAT percentile. ठीक है, तो anyway अगर आपको ये कॉलेज अप्लाई करने हैं तो you have to give CET exam for the MS program. ठीक है, वो बात करते हैं. So going from 80 to 90 percentile, we have Goa Institute of Management, Great Lakes, UPS and XISS. These are 4 colleges you can get a 90. 90 के बाद सीधा KJ Somaya आता है at 97 percentile last year cut off. So Somaya is increase the cut off every year, 95, 96, 97. तो इस बार maybe up to 98 तक जाएगा cut off. But everyone above 97 percentile have a good chance to get a call from KJ Somaya for the PGDM program. Now all these colleges in this list till here have a PGDM program, have the GDPI as well. So most of the colleges are private colleges. There are government colleges, state level colleges, but उनका value इतना अच्छा नहीं है. So these are all the decent colleges which you can apply for. Private, yes, there are most of the private colleges. तो आपको apply करना है तो देखो, ठीक है, it's totally your wish obviously. So अभी किस किस का cut off बाकी है in your bucket, you have to check those colleges जिसका cut off बाकी है, then apply. ठीक है, you take the call on that. It's my responsibility to give the cut offs. Now इधर तक GDPI है up to KJ Somaya PGDM. For the MS program there is no GDPI. So Sydenham cut off will be 99.98 percentile, Sydenham PGDM 99.96 percentile, Somaya 99.97 percentile and Wellington 99.93 percentile. CMATking.com/OMS. If you are applying through ATMA, MAT, CMAT, CET, ATMA, MAT, CMAT, CET, all these colleges you can apply through All India seats, and these are the cutoffs
फॉर द टॉप 4, उसके नीचे सबका कट ऑफ CMATking.com/OMS में मैंने डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके एक बार कट ऑफ देखो, ठीक है। JBMS एज ऑफ टुडे इज नॉट एक्सेप्टिंग CMAT स्कोर, सो वी नॉट क्लियर अबाउट JB, बट बाकी सबका कट ऑफ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कट ऑफ इसका हाई क्यों है इतना, बिकॉज सीट्स आर लेस, ठीक है। देयर ओनली 5 seats, 10 seats, 18 seats, you will see the list. I just uploaded the list there, CMATking.com/OMS, you can check out the list there, ठीक है। and for these colleges, CMATking.com/CMAT, I have uploaded the cutoff for last 3 years on CMATking.com/CMAT, ठीक है। नाउ इन द कमेंट बॉक्स अगर मेरे को किसी ने पूछा कि 83 पे क्या मिलेगा, 84 के क्या मिलेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बोल दिया आपको मैंने 80 to 90 पे आपको ये कॉलेज मिल रहे हैं। 83, 84, 88, 89 तक आपको ये सारा कॉलेज कॉल पक्का आएगा, ठीक है। 92, 93, 94 सबको ये कॉल आने वाला है। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन आस्क मी, मेरा 2 साल का वर्क एक्स है, मुझे जिम का कॉल आ सकता है, आएगा, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, कैसे पढ़ूँ, दिस अ क्वेश्चन वेयर आई कैन हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे दिया, ट्रस्ट मी, दिस हैपन टू मी इन वेरियस वर्कशॉप। 90 परसेंटाइल आया तो 2 घंटे का वर्कशॉप रखा अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर CET। 2 घंटा बैठने के बाद पब्लिक आके बोलता कि सर अभी CET का तैयारी कैसे स्टार्ट करूँ, भाई 2 घंटा वही तो बात किया। Anyway, so this is all student ways, so which I'm fine with that. I'm used to these kind of things. But please ask more intellectual questions. कि GDPI ये कॉलेज मिल रहा है, अच्छा है कि बेकार है, मेरा 2 साल का वर्क एक्स है, ग्रेट लेक्स जाऊँ कि नहीं जाऊँ, UPS जाऊँ कि ना जाऊँ, चेतना जाऊँ कि ना जाऊँ। So these kind of question I can add more value rather than just telling you क्या मिल रहा है, ठीक है। So tomorrow I'm in Nagpur. Today I'm just coming back from Nashik. That's why I got delayed and in uploading the video. So tomorrow I'm in Nagpur. So in case you want to join our workshop for Nagpur, it's a free workshop. So in the description box you can give the link. You can check the link out for the Nagpur workshop, and you can attend that workshop. Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday, 3 days I'm keeping a workshop at Sydenham College in Mumbai. So that's a big bang final takeoff for the CET preparation. Last 30 days preparation for the CET exam. So in case you can join that workshop, description box I've given the details, okay, so you can join us for that program. All right, so all the best, thank you.